Hello students, welcome to my channel Study Online. In this video, I will explain oxidation and reduction reaction. In previous videos, I have explained combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction and double displacement reaction. Now, in this video, I will tell you what are oxidation and reduction reaction. Oxidation, it is the addition of oxygen to a substance is called oxidation, and the removal of hydrogen from substance is also called oxidation. Reduction, the addition of hydrogen to a substance is called reduction, and the removal of oxygen from substance is also called reduction. We will understand from an example. Let us take an example. In this reaction, copper oxide and hydrogen reacts in the presence of heat gives कॉपर एंड वाटर. रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड कॉपर देता है प्रोडक्ट साइड में, तो यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है. इट मीन्स देयर इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, thus इट इज अ रिडक्शन. H2 gives H2O. इस रिएक्शन में H2 दे रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है. देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, therefore it is a oxidation. The substance which gives oxygen for oxidation is called oxidizing agent, and the substance which removes hydrogen is also called an oxidizing agent. वैसे substance जो ऑक्सीजन देता है ऑक्सीडेशन में, वैसे substance जो हाइड्रोजन रिमूव करता है उसे oxidizing agent कहते हैं. Similarly, reducing agent, the substance which gives hydrogen for reduction is called reducing agent, and the substance which removes oxygen is called a reducing agent. वैसे सब्सटेंस जो हाइड्रोजन देता है रिडक्शन के लिए उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं. वैसे सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को रिमूव करता है उसे भी रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं. सिंपल वर्ड्स, वी कैन से दैट दोज सब्सटेंस व्हिच इज ऑक्सीडाइज्ड इज द रिड्यूसिंग एजेंट. वैसे सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज्ड करते हैं वही रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है. ऑक्सीडेशन ही रिड्यूसिंग एजेंट है और रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. सो आई हैव रिटन सब्सटेंस रिड्यूस्ड इज द कॉपर ऑक्साइड. जो रिडक्शन होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉपर ऑक्साइड ही होगा. यहाँ पर H2 दे रहा है. इट मीन्स देयर इज अ ऑक्सीडेशन, देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. सो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड इज द H2. जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कर रहा है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है. Thus, H2 is the reducing agent. Let us take another example. Hydrogen sulfide and chlorine gives sulfur and hydrochloric acid. Here, in this reaction, H2S gives sulfur. It means there is removal of hydrogen. Removal of hydrogen is also called oxidation. So H2S is the oxidation. Chlorine gives hydrochloric acid. Chlorine hydrochloric acid दे रहा है, तो यहाँ पर addition of hydrogen हो रहा है. It means it is a reduction. Addition of hydrogen is also called reduction. Thus, we can write here substance reduced is the chlorine. As I have said that जो ऑक्सीडेशन होता है वही reducing agent होता है. It means H2S also the reducing agent. So substance oxidized is the H2S, therefore reducing agent will also H2S. Reduction, जो reduction होता है वही oxidizing agent होता है. Similarly, in this reaction, substance reduced is chlorine, therefore oxidizing agent will also chlorine. There is another concept of oxidation and reduction in terms of metals and non-metals. This is as follows. If there is addition of non-metallic element or removal of metallic element is called
oxidation, and the addition of metallic element or removal of non-metallic element is called reduction. Non-metallic element का addition या metallic element का removal oxidation कहलाता है और metallic element का addition और non-metallic element का removal reduction कहलाता है. Let us take an example. Copper and oxygen in the presence of heat, it gives copper oxide. Copper is changing to copper oxide. Thus, there is addition of oxygen. copper oxide बन रहा है. यहाँ पर oxygen add हो रहा है. It means copper is the oxidized substance. So, substance oxidized is copper. Now, again, O2 is changing into copper oxide. Here, there is addition of copper. Oxygen copper oxide में change हो रहा है. यहाँ पर copper का addition हो रहा है. Which one is the metal? Therefore, there is addition of metal. So, it is a reduction. Oxygen Cu में change हो रहा है तो copper का addition हो रहा है. Which one is the metal? So, addition of metal is the reduction. So, we can say that substance reduced is the oxygen. जो substance oxidized होता है वही reducing agent होता है. It means reducing agent is Cu. जो substance reduction करता है, reduced करता है, वही oxidizing agent कहलाता है. Substance reduced is O2, therefore oxidizing agent will also O2. इसी तरह मेरे लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए. पास वाले बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन ऑन करें.